Yes, very good. To earn profit and profit prices पे से ही मिलेगा. तो for that the correct answer is D. The correct answer is D. Which of the following is considered as a disadvantage of allocation of resources using market system? Income will tend to be unevenly distributed. People do not get goods of their choice. Men of initiative and enterprise are not rewarded. Profit will tend to be low. It is a disadvantage of market system. Market system में income unevenly distribute होता है. So the correct answer for that is A. Which of the following statements does not apply to market economy? Firms decide whom to hire, what to produce. Firms aims at maximizing the profits. Household decides which firms to work for and what to buy with their income. Government policies are primary forces. Market economy में government has very less role to be played. So the correct answer for that is D. लैंस ने और एक गलत जवाब दिया. वेरी गुड. Then in a mixed economy, all economic decisions are taken by central authority. Wrong. All economic decisions are taken by private. Wrong. Economic decisions are partly taken up by state, partly by private entrepreneurs. None of the above. इसमें इतना सोचने का भी जरूरत नहीं है. ये डी वाला कौन है रे? लैंस ही रहेगा. The correct answer for that is C. It is coexistence of public sector and private sector. 27th one. The central problem in economics is that of comparing the success of command versus market economies, guaranteeing the production occurs in most efficient manner, guaranteeing a minimum level of income for every citizen, allocating scarce resource in such a manner that society's unlimited needs are satisfied to the best possible manner. आंसर क्लियरली उसके अंदर ही दे दिया है. एक ही स्टेटमेंट है वो, फिर भी सी बोलने वाले कोई लोग हैं. The correct answer for that is D.
Capital intensive technique would be chosen in labor surplus economy, capital surplus economy, developed economy, developing economy. का आंसर ही क्वेश्चन के अंदर है, फिर भी सी लिखा देखो किसी ने. It will always be taken up in capital surplus economy. Only they can afford to. अभी मॉडर्न इकोनॉमी रहेगा बट उनके पास अगर कैपिटल सरप्लस नहीं है देन दे कैन नॉट यूज कैपिटल इंटेंसिव मेथड. ओके, तो आंसर इज बी. बोलो सैवियो. टेक्नोलॉजी डेवलप होना और उसके लिए अपने पास कैपिटल सरप्लस होना ये इंपॉर्टेंट है. आज इंडिया में टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है ईयर आफ्टर ईयर, बट कैन वी यूज कैपिटल सरप्लस मेथड? नो, बिकॉज वी आर लेबर सरप्लस कंट्री. कैपिटल इज स्केर्स, अपने पास कैपिटल नहीं है. Therefore, we cannot use capital intensive technique. Is that clear to you now, Savio? Which of the following is not one of the four central questions that studies economics is supposed to answer? What, who produce what, when goods are produced, who consumes that, how are goods produced? देखो central economic problem. What is the central economic problem? देखो क्या है? What to produce, for whom to produce, how to produce. When to produce कभी आता नहीं है उसके अंदर. When to produce बिल्कुल नहीं आता है. The correct answer for that is B. Larger production of dash goods will lead to higher production in future. Consumer, capital, agricultural, public goods. What are capital goods? Can anybody tell me? A is the wrong answer, that is for sure. Capital goods का मतलब क्या है? The goods which are used for further production. तो अगर कैपिटल गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस किया जाएगा तो अपना कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन और बढ़ते जाएगा. So the correct answer for that is B and not A. Is that okay? 31st, economic system in which all means of production are owned, controlled and managed by private people. सिंपल है, प्राइवेट लोगों के पास है तो ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है उधर. When everything is owned by private people, it's capitalism. Macroeconomics is study of
entire economy, right? तो national economy हो गया बी वाला. फ्रीडम ऑफ चॉइस इज एडवांटेज ऑफ, ये बताओ. फ्रीडम ऑफ चॉइस इज एडवांटेज ऑफ सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, नन ऑफ द अबव. नीचे आंसर मत देखो रे. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें. और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी. The correct answer for that is B. Exploitation and inequality are minimal under socialism, capitalism, mixed economy, none of the above. It is always socialism जहाँ पे maximum resources are owned by government. Everything is owned by government. So there is no scope of partiality or inequality. And last one, administered price refers to. देखो administered मतलब controlled. Control कौन करता है? Who controls? Government. So it is the price determined by government authority. So the answer for that is C. So are those 35 questions clear to all of you? Okay. So let me conclude up with the session today. अभी अगले लेक्चर में मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ? I will inform you well in advance on the group so that you can be also mentally prepared. Is that okay? Shall I conclude? अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है. What is communism? Very good. With good question. अभी what is capitalism where everything is owned by private people? Socialism, everything owned by government. And communism में over the period. Communism is a phase of converting capitalism into socialism. समझ रहे हैं? Communism is a phase of converting कैपिटलिज्म इंटू सोशलिज्म. समझ रहा है क्या इसका मतलब? मैंने बहुत सिंपल वे पे बताया. मतलब जैसे कैपिटलिज्म में सब चीजें प्राइवेट सेक्टर ओन कर रही है, उनके पास से धीरे 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 गवर्नमेंट सब परचेज करना चालू करेंगे. एंड एक स्टेज जब आएगा जब गवर्नमेंट के पास सब पावर चला जाता है, सब कंट्रोल गवर्नमेंट के पास चला जाता है, इट इज सोशलिज्म. और the process of purchasing, converting, what we can say,
capitalism into socialism is communism. Is that okay, Abhay Shankar? आपको कोई डाउट है? Now, I have one doubt. अगर आपको डाउट नहीं रहेगा तो how is communism different from socialism? How is communism different from socialism? देखो, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस ये है दैट हम जब बात कर रहे हैं सोशलिज्म में, तो सोशलिज्म में everyone will contribute. Contribution will be made by entire people. Every person in an economy will contribute towards productivity according to their abilities. बट उनको रिटर्न में तभी उतना ही मिलेगा जितना उनका कंट्रीब्यूशन. मगर सोशल कम्युनिज्म क्या बोलता है? एवरीवन विल कंट्रीब्यूट बट दे विल गेट एज पर देयर नीड्स. अभी जैसे फॉर एग्जांपल सोशलिज्म है, बराबर है. कम्युनिज्म में नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये भी करेक्ट पॉइंट है. किसमें बोला तुमने? सॉरी, इन कम्युनिज्म देयर इज नो प्राइवेट प्रॉपर्टी. वेरी करेक्ट. In communism, there is no private property, but in socialism, there can be private property, but the resources will be owned by the government. Communism will reject all religions. There will be no religion. Socialism में religious freedom होता है. Communism is a political system, whereas socialism is an economic system. Okay, so let us conclude with our lecture for today. We'll get back to you again in the next week.